Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. We are doing part 8 computer. Here this is the cover page of a book. Let's click a trendy way of to learn computers. And I am Vandana. Today we are going to do the last chapter of your book and it is chapter 12. And the name of the chapter is Functions and String in Python. So let's start with the chapter. Children, let us learn more about Python in this chapter. So in the previous chapter also we have learned some new points about Python, and in this chapter we are going to learn some more points in detail. So first we are going to learn about the functions, then strings and some more programs. First comes the functions. A function is a block of organized and reusable code used to perform a single or related action. Functions receive data in the form of arguments in which it is used to run a specific set of statements or produce a final result or output. So function क्या है? Function है एक block of organized और reusable code. So कुछ ऐसे codes जिससे जो हम फिर से use कर सकें to perform a single or related action. सो किसी ऐसे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो या तो सिंगल हो या फिर उससे रिलेटेड. फंक्शंस रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट्स. सो फंक्शंस जो भी डेटा रिसीव करते हैं वो आर्गुमेंट्स के फॉर्म में रिसीव करते हैं एंड यूज इट टू रन अ स्पेसिफाइड सेट. और यूज किया जाता है इसे रन करने के लिए एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एंड इसके बाद प्रोड्यूस किया जाता है फाइनल आउटपुट. Now features of function. What are the features? Functions are the basis of procedural programming. ये एक basis है एक procedure से चलने वाली programming. Some important features of functions are: a program is divided into small modules and each module performs some specific task. So एक program को कई small modules में divide किया गया है और हर module जो है कुछ तरीके का specific task करता है. Each module can be called as per the requirement. So हर module को उसकी requirement के according बुलाया जाता है. We can call a function as many times as required. So जितनी बार भी हमें function की जरूरत हो उतनी बार हम उसे बुला सकते हैं. This saves the programmer's time and effort to rewrite the same code again. So बार बार same code को लिखने से programmer बच जाता है and because of this feature, therefore it also reduces the length of the program. और इसीलिए जो है ये हमारे प्रोग्राम की लेंथ को भी डिक्रीज कर देता है. Dividing a bigger program into smaller functions make the program more managerial. So बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे फंक्शंस में डिवाइड करने पे क्या होता है हमारे जो प्रोग्राम है वो इजीली मैनेज किए जा सकते हैं. It makes debugging easy and makes the code efficient. So debugging जो है उसको इजी करता है और कोड जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं, बोथ इन टर्म ऑफ टाइम एंड मेमोरी. टाइम और मेमोरी दोनों के केस में. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फंक्शंस. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन फंक्शन. द पाइथन फंक्शन consists of the following components. These are the components. First is name of the function. A function name should be unique and easy to correlate with the task it will perform. So function का जो नाम है बहुत ही यूनिक होना चाहिए, easy to correlate, बहुत ही easily इसे correlate किया जा सके with the task it will perform, जो भी task को perform करेगा. We can have functions of the same name with different parameters. So हम जो है एक ही function के बहुत सारे same name के साथ बहुत सारे functions को रख सकते हैं जिसमें different parameters को use किया जाए. Next is arguments. The input given to the functions are referred to as argument. So जो भी input हम देते हैं function को उससे argument कहा जाता है. A function can or cannot have any argument. So function में argument हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है. Statements. The statements are the executable instructions that the function can perform. So statement ऐसे जो है instructions हैं जो function जो है easily perform कर सकता है. ये statements ऐसे instructions हैं
जो फंक्शन इजिली परफॉर्म कर सकता है. रिटर्न वैल्यू अ फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू. सो फंक्शन जो है रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी रिटर्न कर सकता है जो भी इसकी वैल्यू है. नाउ क्रिएटिंग अ फंक्शन, हाउ कैन वी क्रिएट? वी कैन क्रिएट द फंक्शन इन द फॉलोइंग वेज. डिफाइनिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए? वी कैन यूज द DEF की. सो DEF की को हम यूज कर सकते हैं टू बिगिन द फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन को यूज करने के लिए. नेमिंग अ फंक्शन, प्रोवाइड अ मीनिंगफुल नेम टू फंक्शन. अपने फंक्शन को एक मीनिंगफुल नेम देना चाहिए. एंड सप्लाई पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स सेपरेटेड बाय कॉमा आर गिवन इन द पैराथीसिस फॉलोड इन द नेम ऑफ द फंक्शन. सो जो भी पैरामीटर होते हैं वो पैराथीसिस में दिए गए होते हैं फंक्शन के नाम के साथ. दे आर बेसिकली द इनपुट वैल्यू वी पास टू द फंक्शन. सो ये क्या है? ये इनपुट वैल्यू है जो हम पास करते हैं फंक्शन को. नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द फंक्शन. द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंटेन्स पाइथन स्टेटमेंट. सो बॉडी जो होती है फंक्शन की, इसमें पाइथन के स्टेटमेंट्स होते हैं दैट मेक आवर फंक्शन परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, जो हेल्प करते हैं हमारे फंक्शन को दिए गए टास्क को परफॉर्म करने में. सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन इज, फंक्शन को क्रिएट करने के क्या क्या सिंटेक्स हैं? लेट्स से DEF हमने पढ़ा था कि DEF यूज करना हमें. नाउ नेम ऑफ द फंक्शन है, देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड देन बॉडी. सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन. नाउ कॉलिंग अ फंक्शन, a function can be called any time from other functions or from the command prompt after the definition. So ये function को कहीं भी कभी भी जो है एनी टाइम हम उससे जो है यूज कर सकते हैं आफ्टर द definition. For calling a function, we type the function name and pass the parameters. So पहले हम function का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके parameters को pass on करते हैं. For example, to call a function, function को call करने के लिए these are the syntax that we have to use. Here first the name is written, next the body is written, and here function की call को हमने लिखा है. So same here we are going to write to print a string by calling a function. So calling a function के लिए आपने एक print string लिखी है. Let's see what we have written. DEF hello is the name here given. Then we have written the body is written here, hello, name, and how do you do, and then calling function by passing parameters, hello, Preeti. So after writing all these syntax, see what the result we are going to get. Here we can see hello Preeti, how do you do. So this is the result that we got after writing the following commands. Now types of functions in Python. So Python के कौन कौन से types हैं, functions के कौन कौन से type हैं? Let's see. We have mentioned earlier that one of the strengths of the Python language is that Python functions are easy to define and use. So हमने पहले पढ़ा था कि जो strength है Python का वो ये है कि उसके जो भी function है वो बहुत ही easy to define होते हैं, बहुत ही easily define कर सकते हैं और उन्हें अच्छे से easily use कर सकते हैं. Python functions can be categorized into built-in function. Python function को हम built-in function में भी categorize कर सकते हैं. And user-defined function में भी हम इसे categorize कर सकते हैं. Let us discuss about them in detail. अब हम पढ़ेंगे what are built-in function and what are user-defined functions. So the built-in function is the print and input belongs to the category of built-in function. So ये दोनों जो category यहाँ लिखी गई है print और input, ये दोनों हैं built-in function की category में. We also have other built-in functions like range, type, etc. So इसके अलावा भी कुछ built-in functions यहाँ पे दिए गए हैं. The main difference between these two categories is that built-in function is not required to be written by us. So built-in function जो है वो हम नहीं लिख सकते, whereas a user-defined function has to be developed by the user at the time of writing the program. So ये जो main difference है कि built-in function already built in है हमारे computer system में, हमारे Python में,
सो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द यूजर और हमारे अकॉर्डिंग हम उसको टाइम टू टाइम पे चेंज कर सकते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय यूजर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम. सो हमारे प्रोग्राम की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं. Once the user defines a function, the user can call it in the same way as the built-in function. So एक बार यूजर ने अपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, मीन्स उसे बना लिया है, तो उसके बाद वो उसे built-in function कह सकता है. User defined functions are divided into various categories based on their parameters and return type. So इसे जो है different categories में डाला गया है और इनके पैरामीटर्स या फिर इनके रिटर्न टाइप को देखते हुए. द फंक्शन दैट डू नॉट टेक एनी पैरामीटर्स एंड डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो फंक्शन जो कोई भी पैरामीटर को नहीं लेते हैं या किसी भी रिटर्न वैल्यू को नहीं लेते हैं, आर कॉल्ड टाइप 1 फंक्शन. ऐसे फंक्शंस को हम टाइप 1 फंक्शन कहते हैं. अब टाइप 2 क्या फंक्शन होता है, लेट्स सी. टाइप 2 फंक्शंस टेक पैरामीटर्स बट डू नॉट रन एनीथिंग. ये पैरामीटर्स को तो लेते हैं बट ये कुछ भी रन नहीं करते. टाइप 3 फंक्शन टेक पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू. टाइप 3 फंक्शन पैरामीटर्स को तो लेते हैं बट वो वैल्यू को भी रिटर्न करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो लेट्स सी, एक एग्जांपल के थ्रू वी आर गोइंग टू रीड इट. To add two numbers using all the three types of user defined function. So दो नंबर को हमें ऐड करना है जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है उनके थ्रू. सो टाइप 1 भी यूज करना है, 2 भी और 3 भी यहाँ पे यूज करना है. सो हियर टाइप 1 इज यूज्ड, नेक्स्ट टाइप 2 एंड देन टाइप 3 इज यूज्ड. देन वी हैव written the print of type 1, then type 2 and then type 3. So this is the syntax that we have to enter in our computer, and on entering the syntax we are going to get the following result. So enter the first number is 5, enter the second number is 10, the sum of the both number is 15. Calling type 2 function है, the sum of both the number is 28. Calling type 3 function है and the answer is 50. So this is the result that we are going to get by the three types of functions that we have written in a program. What is string? A sequence of characters which is enclosed or surrounded by single or double quotes. So string जो है एक sequence of character है जिसमें हम single या फिर double quotes का use करते हैं. The sequence may include a letter, number, special character और a backslash. So इनमें जो है कुछ भी हो सकता है, या तो कोई letter हो सकता है ABCD, नंबर हो सकता है 1 2 3 4, स्पेशल कैरेक्टर, स्टार, एक्सट्रिक्स या फिर बैकस्लैश यूज हो सकता है. पाइथन ट्रीट सिंगल कोट्स एज डबल कोट्स. सो पाइथन क्या है, वो सिंगल कोट को भी डबल कोट जैसे ही ट्रीट करता है. नाउ हियर वी हैव रिटन द प्रिंट स्ट्रिंग इज रिटन हियर. दिस इज Preeti's pen. This is the string. Now we are going to learn how can we create strings. Strings can be created by enclosing characters inside single or double quotes. So single या double quotes के अंदर हम अपने जो भी characters हैं उसको इसके अंदर डाल देंगे. So we are creating the strings. In this way we can create the strings. It is like assigning a value to the variable. So ये क्या है, ऐसा है जैसे कि हमने एक वैल्यू का असाइन किया है किसी भी वेरिएबल को. Multi-line strings. A multi-line string in Python begins and ends with either 3 single quotes. So multi-line string जो है वो 3 single quotes के साथ वो बनता है and 3 double quotes और 3 double quotes के साथ बनता है. Any quotes, tabs or new lines in between the triple quotes are considered part of the string. So कोई भी quote, tab या new line इनके बीच में जो होता है उन्हें ट्रिपल कोट कंसिडर किया जाता है. So here program 3 to create a string. Here we are creating the string
first name is Preeti and the last name is Rajput. Empty string, this does not bold any value and displays an empty space when printed. So जब इसे प्रिंट किया जा रहा है so ये जो है डिस्प्ले कर रहा है एक empty space. Using escape sequence with string. String के साथ कैसे हम escape sequence को use कर सकते हैं. Escape sequences or characters are used to insert special character. Escape sequence या फिर character को कब यूज किया जाता है? स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए. That are valid in Python, जो Python में valid होते हैं. Quotes are special characters and to insert them in string, we must escape them with a character in front of them. So quotes जो है स्पेशल टाइप की कैरेक्टर्स होते हैं and to insert them in string में उन्हें इंसर्ट करने के लिए we must escape them with the character info. So इन्हें जो character info के साथ escape करने के लिए use किया जाता है. An escape sequence is a sequence of character that does not represent itself when used inside the character or string. So escape sequence एक sequence है, एक sequence of character है जो नहीं यूज किया, that does not represent itself, जो अपने आप को represent नहीं करता है when used inside a character or a string. जब किसी भी character या string में इसको use किया जाता है. It is typically used to specify actions such as carriage return and tab movement. इसे जो है specify किया जाता है किस तरीके से? For carriage return या फिर tab movement, इन दोनों के लिए से specify किया जाता है. The backslash क्या होता है? Is a special character and is also known as the escape character. इसे ये एक अलग तरीके का स्पेशल कैरेक्टर होता है और इसे escape character के भी नाम से जाना जाता है. In Python it is used to represent white space. इसे Python में white space के भी नाम से जाना जाता है. For example, /t for tab and /n for new line and /r for carriage return. So इन सब के लिए आप देखोगे backslash ही यूज किया जा रहा है इन सारे वर्ड से पहले. Now to print special symbol using escape sequence. Escape sequence की मदद से हम special symbols को print करेंगे. So here we are printing I love programming in. Then we have used the backspace in Python. So this we have written and we are going to get this following result. I love programming in, and then Python is written in the next line. To print multi-line strings, this is the program that we have written, and here this is the output that we have got. Now next is traversing a string. Traversing means visiting each element and processing it as required by the program. So हर एक string को visit करना और उसे ऐसे process करना जो एक program को चाहिए. We can access the characters of a string one at a time using indexing. So जो भी हमारे character हैं उसे हम access कर सकते हैं in a string. कैसे यूज कर सकते हैं? वन एट अ टाइम, सिर्फ एक समय में एक ही को हम एक्सेस कर सकते हैं. देयर आर टू वेज ऑफ इंडेक्सिंग अ स्ट्रिंग. सो दो तरीके दिए गए हैं जिससे हम स्ट्रिंग को इंडेक्स कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज इंडेक्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द सेकंड वन इज इंडेक्स विथ नेगेटिव इंटीजर्स. सो इंडेक्स फ्रॉम लेफ्ट स्टार्ट्स विथ 0. सो लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. एंड index with negative integers means index from right starts with -1. So आप ऐसे डेसिमल पॉइंट्स में भी ऐसे यूज करते हैं. जब हम राइट साइड आते हैं तो माइनस में यूज हो रहा है. सो -1 से स्टार्ट होगा और लेफ्ट में जो है प्लस से यूज करते हैं. सिंटेक्स फॉर ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग. हियर द सिंटेक्स इज गिवन. वी हैव टू लर्न दिस. नाउ द प्रोग्राम इज गिवन हियर टू एक्सेस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हमने ये कमांड को यहाँ पे प्रिंट किया एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. हमने क्या किया? प्रीति का फर्स्ट लेटर लिया, दैट इज य, एंड -1 मीन्स
पीछे से लास्ट लेटर हमने लिया है, so P and I is printed here. Now next is string operators. There are two basic string operators in Python, plus and star. Python uses plus for concatenations and star for replication. String concatenation operation. String concatenation operation joins two or more strings into one. So ये क्या करता है, एक साथ दो से ज्यादा strings को जोड़ देता है. To join two or more strings using string concatenation operation. So यहाँ पे हमने कई सारे strings रखे हैं, अभी हमने सबको plus कर दिया है by using this, and here we can see the result is here. Here is Python. Now string replication operation, ये कैसे काम आता है? The replication operation is used to repeat the string for a given number of times. So जो भी string है उसको कई बार दिए गए number of times तक use करना है, repeat करना है. To repeat the string using string replication operation है, तो यहाँ पे string है हमारा hello, और इसे repeat कितनी बार करना है? 3 times हमें repeat करना है. So now we can see hello, 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 it is repeated 3 times. So this is what we are going to get as our answer. Next is string built-in function. What is a string built-in function? Python includes the following built-in function to manipulate string. So Python के अंदर कई सारे built-in function हैं जो manipulate करता है string को. So first is len. The len function calculates and returns the length of the string. String की length को ये define करता है या calculate करता है. Supplies to an argument. So here is the syntax. Next is lower. The lower function converts all uppercase letters to lower. So lower क्या करता है? upper case के जितने भी letter हैं, capital A, capital B, capital C, इन सबको small case में convert कर देता है. Here is the syntax given. The upper function converts all the lower case into upper case. So जितने भी lower case के हमारे letters होते हैं उन्हें ये upper case में convert कर देता है, and the syntax is given. Next is capitalize. The capitalize function returns a string with the first character in capital. So capitalize क्या करता है? पहले character को capital में कर देता है. Now the syntax is given here. To use various string built-in function. So all the strings that we have learned here, we are applying it there. So hello को हमने लिया है, यहाँ पे हमारा string है hello. अब उसको lower case में भी किया है, upper case में भी और capitalize में भी किया है. सारे capital अब इसे lower में करना है, सारे small इसे upper में करना है, और capitalize first word capital में करना है. So after applying it, we can see जो upper case में था वो सब lower में चला गया, जो lower में था वो upper में आ गया है, और यहाँ पे capitalize first word capital हो गया. Some more programs to calculate the area of different shapes. अब जो है area हमें calculate करना है different shapes का. So we have to write down the syntax here, and here we can see the result. यहाँ पे rectangle का निकाला हमने area, then square, then circle, and then triangle. To perform various string operations, अलग-अलग string operations को हमें perform करना है. So here string is हमें publication, and then we have entered the string, and we can see whatever we have written here, that will be applied here. To check whether a triangle given by the user is scalene, isosceles or equilateral. So किस type का triangle ये check करने के लिए we have entered the Python program here. The syntax is entered here, and here we can see the result. So children, when you are going to write down these syntax in your computer, then we are going to get this type of answers. So जब तक आप इसे नहीं करेंगे, you will not be able to understand ये कैसे answer आ गया. So very deeply you have to read it again and again, and then without trying you cannot understand. So you have to do this in your computer. There are around 700 separate programming languages. So 700 तरीके के programming languages हैं. Some of the most popular ones are JavaScript, Swift, Scala, Python, PHP, Go, Rust, Ruby, and C.
hash. Functions help us to break our program into smaller parts or modules. Python function can be categorized into inbuilt function and user-defined function. A sequence of characters that are enclosed or surrounded by single or double quotes are known as the strings. So let's do the book exercise, children. Which type of function is upper? It is built-in function. Now, what is the input given to the functions referred to as? So जो हम input मिलता है functions के लिए उसे क्या बोलते हैं? It is called an argument. Children, rest of the questions. Are you homework? Now, the dash function returns a string with the first character in capital. So first character को capital में कौन करता है? Capitalize करता है. And then next is a dash can be defined as a block of reusable codes that perform a specific task. So here the answer is function. Next, question and answers. What is the use of functions? So a function help us to break our program into smaller parts, and then it is easy to manage the programs. Children, the rest of the questions are your homework and you have to do on your own. So by this, we have ended our chapter. We have come to the end of our chapter, and I hope that you understood. And as I told you that you have to practice whatever was taught you here. All has to be practiced in your computer so that you can easily understand it. जो भी आपने पढ़ा उसे practice नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे. So उसे practice करिए computer में, and then you will see कि Python is very easy. So you have to also complete the book exercise that I have given you, and I'll be waiting for you with a new video. And till then, you have to stay lit.